यहाँ से डिस्ट्रिक्ट से पानी ओवर टैंक में जाएगा, टैंक में प्रेसिपिटेट करेगा बोला है, केमिकल डालना है क्या? सुदीप, इनका नाम क्या है चीफ गेस्ट का, फिर से बताना। पानी में जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इनका नाम है मुकुट बर्मन। निकलेगा जब मुकुट ठीक है। आयरन जो है पूरा सेपरेट हो जाता है। हाँ, तो सेपरेट हो तो पानी का जो टैंक का नीचे में वो पानी आपका आयरन रह जाएगा, प्रेसिपिटेट करेगा। हाँ, प्रेसिपिटेट। और जो फ्रेश पानी है तो फ्रेश पानी डायरेक्ट आपका आ जाएगा फिल्टर ऊपर से ऊपर। अच्छा, जो पानी निकलेगा ना गेट लेवल से कितना ऊपर पाइप रखा है? गेट लेवल से कितना ऊपर पाइप रखा है? जो प्रेसिपिटेट हो जाएगा ना, तो प्रेसिपिटेट होने हमें तो जाम हो जाएगा थोड़ा। नहीं, उसके लिए क्या है, महीने में तो केयरटेकर जो रहेगा उसने महीने में 2 बार ओवरहेड टैंक को क्लीन करना। क्लीन करने वाले आउटलेट रखा है। हाँ, आउटलेट है तो ड्रेन लाइन एक आउटलेट, ड्रेन लाइन है। ड्रेन लाइन वहाँ पे जो है नहीं, वहाँ पे वाल्व है। हाँ, तो वो क्लीन करेगा ना, वो वाल्व खोलने से वो पानी नीचे आ जाएगा। तो ड्रेन लाइन किया हुआ है, ऑटोमेटिकली पानी नीचे आ जाएगा। जैसे ये जो टैंक है इसमें जैसे नीचे में देखो पाइप ऐसे रखा है, उधर में ऊपर में अगर पानी हम पाइप रखते हैं तो पानी ऐसे करके गिरेगा ना, खराब वाटर रहेगा, फिल्टर वाटर रहेगा। ये पाइप ये ड्रेन लाइन का पाइप, ड्रेन लाइन का पाइप है, ये डायरेक्ट आपका जा रहा है। जो प्रेसिपिटेट यहाँ से निकल जाएगा। हाँ, ओके, इधर नीचे में তার মানে যেটি পৃথিবীতে পরিব এই ফালসিটা খুলি দিব, এই পেটি ভাল সাফা এই দুইটা লগে এই পানিটো ইংরেজি অবস্থা कहाँ गिरेगा ये आपका डायरेक्ट जाएगा आपका नहीं 100 फीट है। किसमें भी आउटलेट। हाँ, ये आपका बैकवाश का जो पानी आएगा वो भी आपका अच्छा स्लैश पीस। हाँ, कहाँ पे है? हाँ, इसके नीचे में है, इसके नीचे में। इसको ये करने में तो इसको करना पड़ेगा ना, इसको सेट करने का कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली उसमें हम लोग जो पहले आपका टैंक ये देखिए, ये जो होगा आपका मतलब पानी यहाँ पे जो प्लास्टिक में पानी जो आएगा, वाटर जो भी आएगा फिर वो भी फिल्टर होते रहेगा। फिल्टर होकर आपका नीचे में जो पानी जाएगा मिट्टी में वो भी आपका क्लियर होकर ही जाएगा। আমি যদি সত্যটা পাই একটা মেশিন তো বহুত টাকা বঙ্গরে বঙ্গরে ইউজ করতে বঙ্গর সাথে এই দুটোর কাছে দিব না লাগে তো তাতে তো পাবলিক এরিয়া যদি বলো আপনাকে ইচ্ছা না করে না আমাকে ইঞ্জিনিয়ার ये तो हाँ बाकी नाम ये तो जोड़ दो हेलो सुदीप दा। हेलो मिनाज, हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। सर हम थोड़ा ये परिचय करा देते हैं। सर ये एसडीओ है कामरूप पीएचडी का मुकुट बर्मन जी, और सर ये हमारा रिस्पेक्टेड साहब असिस्टेंट इंजीनियर है कामरूप पीएचडी का रंजित कलिता जी। ओके, हाँ, तो अभी हम लोग ये लोग आए हैं, ये जो हमारा लॉन्चिंग प्रोग्राम है, लॉन्चिंग प्रोग्राम के हिसाब से ये लोग आए हैं प्लांट विजिट करने के लिए। प्लांट को हम दिखा रहे हैं क्या प्रोसीड्योर है, क्या क्या है क्या नहीं है, तो वो हम लोग दिखा रहे हैं। हाँ, तो सर आइए हम आपको दिखाते हैं। अच्छा, इधर से ही शुरू करते हैं। तो गोबर जी बोला है इसलिए ये एशियम का जगह ये मैं समझता है क्या इजाजत को होना चाहिए, इजाजत को कोई शास्त्र नहीं, वो बोला है जो पब्लिक प्लेस को हमारा अच्छा है तो हमारा जो बॉस है ना पहले तो नहीं किया है, पहले तो बोल दिया है जो नीचे कुछ कहते हैं आया था वहाँ पे, इसलिए हम ये जगह ठीक है। अभी हमारा अपना गेस्ट भी है तो यूएसए से, आपका दिल्ली से भी है, नोएडा से भी है, बंगाल से भी है, और यहाँ से भी है। तो सर ये प्लानिंग में पूरा समझा देता हूँ। ये जो आपका बोरिंग जो है, बोरिंग से आपका सबमर्सिबल पंप लगा हुआ है, सबमर्सिबल पंप से आपका 40 का बोरिंग है। तो ये बोरिंग, हाँ ये हैंड बोरिंग,
क्योंकि आपका कितना फीट नीचे दिया है? 180 फीट। ये जो सन का लेयर है कितना कितना फीट के इसमें है? जो आपका जो पाम जो है ना, लिथोलॉजिकल डाटा है इसका? हाँ लिथोलॉजिकल डाटा की देखिए, ऐसे तो लिथोलॉजिकल डाटा ऐसे नहीं है क्योंकि लिथोलॉजिकल डाटा कोई मांगता नहीं है, लेकिन हम लोग पाम को जो डाले हैं, जो आपका सही लेयर है उसी में ही डाले हैं। फाइन सन कितना से कितना में है और सन का कितना उसका डिटेल रिकॉर्ड एक्चुअली वहाँ पे एक्चुअली पहले जब हम बोरिंग किए थे, अलग अलग करके हम टैंक उठा के रखे थे। हाँ, यहाँ पे जो शर्मा जी है, नाजिर शर्मा जी है, जो है एक्चुअली थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हुआ था उस टाइम पे। हाँ हाँ, इसीलिए हम उसको दिखाए थे। हाँ, तो ये बोरिंग से आपका रॉ वाटर पानी उठ के जा रहा है आपका, यहाँ पे जा रहा है आपका जो रॉ वाटर टैंक। और ये जो आपका जो पानी है, मतलब जो बोरिंग का पानी जब ऊपर में जा रहा है, इसके साथ हम लोग एक केमिकल भी साथ में भेजते हैं, जिसको डोजिंग केमिकल बोलते हैं। अच्छा, जो वो डोजिंग केमिकल का हम अंदर में है, हम आपको दिखा देंगे। तो जो आपका डोजिंग केमिकल डोजिंग टैंक में रहता है, और डोजिंग टैंक से जो आपका डोजिंग पंप के थ्रू ये केमिकल एक साथ, जब आपका रॉ वाटर भी ऊपर में जा रहा है और ये डोजिंग केमिकल भी, दोनों एक साथ ऊपर में जा रहे हैं। वो बाहर में पाइप है, हम आपको दिखा रहे हैं। वो जो ऊपर में जो पाइप जा रहा है उधर से जाएगा। हम आपको अंदर में आपका डोजिंग टैंक भी है। इसका केमिकल क्या केमिकल है ये केमिकल डोजिंग केमिकल जो है वो पॉली एल्यूमिनियम क्लोराइड है, और हम लोगों का खुद का जो बनाया हुआ कुछ फ्लॉक सॉल्ट है। हाँ, तो हम लोग बनाते हैं इसको। वो सब मिला के हम लोग केमिकल बनाते हैं, इसमें हाइड्रोक्लोराइड भी है। तो वो मिला के ये केमिकल, मतलब बोरिंग का पानी जब ऊपर में जाता है साइमल्टेनियसली वो भी साथ में जाता है। और ऊपर में आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी लगा हुआ है, जो आपका आयरन जो है, मतलब थोड़ा नीचे गिर, ठीक, उसका पानी डायरेक्ट आपका आता है फिल्टर में। तो फिल्टर में अंदर में 4 फिल्टर है, 4 फिल्टर से पानी पूरा ट्रीटेड होके, फिर माइक्रोन फिल्टर होके, फिर पानी आता है आपका ये आपका फिल्टर वाटर टैंक। हाँ, फिल्टर वाटर टैंक से पानी आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन उसके पहले जब डिस्ट्रीब्यूट होगा डायरेक्ट पब्लिक को, उसके पहले भी हम लोग एक वो भी लगा है, अल्ट्रावायलेट मशीन, जो बैक्टीरिया अगर पानी में कोई रहेगा वो भी पूरा क्लीन कर दे थ्रू एटीएम पानी निकले। सर आइए हम आपको अंदर का सिस्टम थोड़ा दिखाते हैं। जैसे बोला था, ये हो गया आपका डोजिंग टैंक। इसमें आपका डोजिंग केमिकल रहता है, ठीक है। और ये है आपका डोजिंग पंप। डोजिंग पंप से ये केमिकल आपका जा रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं। कौन सा पाइप? ये आपका पाइप से ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। और इसके साथ रॉ वाटर जो जा रहा है उसके साथ एक साथ जा रहा है। अच्छा। हाँ, और इसीलिए डोजिंग केमिकल इसमें होने से क्या होता है, आपका जो आयरन है पानी का, तो आयरन ऐसे ही पहले से ही थोड़ा पेसिमेटेड होकर बाहर चला। अच्छा, वो जो पंप चलेगा ये सोलर में ही चलेगा? सोलर में चलेगा। हाँ, क्योंकि ये डीसी पंप है और आपका सोलर में चलेगा। डोजिंग केमिकल जो दिया है आप लोग, हाँ तो पहले तो दिया है। हाँ, तो जो बाद में तो खत्म हो जाएगा ना, खत्म हो जाएगा। वो बाद में भी पूछने वाला नहीं, मिल जाएगा। इसीलिए हम लोगों का जो फ्लॉक सॉल्ट जिसको बोलते हैं, फ्लॉक सॉल्ट हम यहाँ पे दे के रखे हैं, जो आपको ऑलरेडी ये 2 साल के लिए सप्लाई हम लोग दे के रखते हैं। हाँ, आप लोगों का ऐसे ही 3 साल का ये 3 साल का आपका ऑपरेशन मेंटेनेंस है ये। हाँ, तो ये आपका 2 साल की सप्लाई इसमें दे के रखता है, फिर खत्म हो जाएगा, फिर हम दे देंगे। अच्छा, इसका ड्राइंग आपके पास है? हाँ, ड्राइंग भी है, तो हमारे ऑफिस से दिया था क्या? हाँ, चीफ इंजीनियर का ऑफिस से मिला था। वो भी हम आपको दे देंगे, एस्टिमेट भी आपको दे देंगे। हाँ जी। अच्छा, और ये आपका जार है वहाँ पे रखा है, देखिए ये सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का जार है। हाँ, ये भी 2 साल का सप्लाई है। तो हम अभी 2-2 साल का इसीलिए दे के रखा है, क्योंकि ज्यादा साल का देंगे तो वो खराब हो सकता है, तो 2 साल कुछ नहीं हो। अच्छा, एक बात आपको पूछना था, बुरा मत मानिए। नहीं, इसमें जो आप लोग ये बनाया है, हाँ, हमारा ऑफिस का कोई ऑफिसर ने बोला था ना, या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई? नहीं, एक्चुअली हमको वर्क ऑर्डर जब हमको मिला था उसके ऊपर में हमको डीसी ऑफिस में स्पेसिफिकली नहीं, वो पिन पॉइंट लोकेशन वहाँ से हमको मिला है ना।
ইনকাম লগতে উঠি এটাই আছিলে থাকিলে মানে সেইটো মানে ওদালগুৰিত দুটা আছে নেকি? দিছিলে সেইটো মানে সাংসাৰিকতে দিব ওদালগুৰি में दो है ना एक माजुली में दो है। মাজুলী में दो মাজুলী बोले एकदम धुनिया चली আছে itu মানে कमिटी আছে विजर्स कमिटी है মাজুली में और अच्छा चल रहा है कमिटी में वो बहुत जी बोला है नहीं हाँ माजुली में तो अभी मतलब एक ही साथ दो जगह एक कमलाबाड़ी आपका हेल्थ सेंटर है और आपका माजुली गौरमो हॉस्पिटल है दोनों में। एक बात है ये सब देखिए कौन ये वाला नहीं ये तो हम पेंटिंग कर देंगे ये पेंटिंग करा देंगे तो सर नहीं एक्चुअली क्या ये हम लोग लगा के तो थोड़ा सिस्टम हम बोल देते हैं ये डोजिंग केमिकल के साथ आपका रॉ वाटर का जो पानी ऊपर में चला गया वहाँ पे डायरेक्ट आपका आता है ये फर्स्ट कॉलम है फर्स्ट फिल्टर है इसमें आता है इसमें आपका ये सेडिमेंट फिल्टर बोलते हैं इसमें ठीक है इसमें जैसे आपका ड्रिंक सैंड है फिल्टर सैंड है ग्रेवल सैंड और ये सब होता है ठीक है तो इसमें से आपका ऐसे बेटर्स भी हो रहा है हाँ ये आपका एमपीवी है मल्टीपोर्ट वाल्व इसमें आपका हाँ ये फिल्टर है रिंच है ये बेपास में रिंच नेक्स्ट फिल्टर राइट हाँ सर ये सेडिमेंट फिल्टर है सेडिमेंट फिल्टर से सर सेडिमेंट फिल्टर से ये जाएगा आपका आयरन फिल्टर में हाँ इसमें आपका आयरन रिमूवल मीडिया है हाँ जो जिसमें आपका आयरन पूरा निकाल के पानी की आपका जाएगा यहाँ पे क्या निकालेगा है बोला है ये सेडिमेंट फिल्टर हाँ समझता फिर ये आयरन फिल्टर आयरन रिमूवल फिल्टर फिर सर ये है आर्सेनिक रिमूवल फिल्टर इसमें जो आर्सेनिक अगर पानी में रहेगा ये पूरा निकल जाएगा फिर इसका पानी जाएगा आपका इसमें जो इसका हम बोलते हैं पॉलिशिंग यूनिट मतलब पानी में क्या होता है पानी का जो टेस्ट होता है तो क्लीन करने के बाद फिल्टर से होने के बाद पानी का टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाता है तो टेस्ट को ठीक करने के लिए हम लोग ये पॉलिशिंग यूनिट देता है जिसमें आपका एक्टिवेटेड कार्बन रहता है हाँ तो एक्टिवेटेड कार्बन अगर पास होगा तो आपका ये पानी का जो स्वाद है वो ठीक हो जाएगा टेस्ट ठीक हो जाएगा फिर आपका ये जो वाटर आपका जाएगा माइक्रोन फिल्टर में अगर कोई माइक्रोबायोलॉजिकल कोई भी पार्टिकल्स है कुछ भी है हाँ वो भी निकलने के बाद ये डायरेक्ट थ्रू वाटर मीटर आपका चला जाएगा ट्रीटेड वाटर टैंक नीचे जो टैंक है आपने जो बोला था यू ट्रीटमेंट कहाँ पे हाँ बोल स्टेप बाय स्टेप हमारा तो ये ट्रीटेड वाटर टैंक में पानी स्टोर होकर रहेगा ठीक है अगर के चलिए कोई आदमी पानी लेने के लिए आया है हाँ तब वो पानी डायरेक्ट पाइपलाइन से इधर में आएगा यूवी में जो आपका अल्ट्रावायलेट रे है यूवी में से ये पाइप से ऊपर पानी आएगा पानी आके ये टैप 3 है टैप 2 है ये टैप 1 है हाँ तीनों है यहाँ पे हम लोग ये जो मशीन लगा है इसमें जैसे जो आप पकड़ के चलिए कोई आदमी 20 लीटर का हाँ पानी लेना चाहते हैं 5 रुपया पकड़ चलिए कि 5 रुपया उसका रेट हाँ तो फिक्स करके रखता है अभी फिक्स करके रखते हैं इसको आप चेंज कर सकते हैं कभी भी चेंज कर सकते हैं रिचार्ज कमिटी आप रिचार्ज कमिटी बना के वो अगर डिसाइड करेगा कि 5 रुपया में हम देंगे कि 4 रुपया में देंगे कि 10 रुपया में देंगे वो कैसे भी करके आप चेंज कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे हम लोग और एक टेक्नोलॉजी यूज किया है इसमें क्या होता है आप आरओ फिल्टर तो देखे होंगे आरओ में क्या होता है आपका 85% पानी आपका वेस्टेज होता है लेकिन हम लोग का जो फिल्टर है इसमें आपका एक बूंद भी आप वेस्टेज नहीं करते हाँ इसीलिए ये जो है ये फ्लो सेंसर है हाँ ये फ्लो सेंसर जो होगा पानी का एक एक बूंद को एक एक ड्रॉप को काउंट करता है ठीक है तो कोई 20 लीटर अगर लेगा तो उसको 20 लीटर ही मिलेगा उससे ज्यादा उसको नहीं मिलेगा सेंसर में इसे हाँ सेंसर में ऐसा ही होगा क्योंकि इसका टेक्नोलॉजी ऐसा है अरे कहाँ से निकलना है ये पाइप किसके नहीं ये ऐसे सपोर्ट के लिए इसका कोई काम नहीं है और इसमें हम लोग एक आपका वो इन्वर्टर और बैटरी भी देके रखते हैं कि अगर पकड़ के चलिए ऐसा टाइम है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी नहीं है कुछ भी नहीं है पूरा वेदर खराब है उस टाइम के थ्रू इसके अगर ट्रीटेड वाटर में अगर पानी रहता है ना तो एटीएम के थ्रू ये एटीएम इससे चल सकता है ना तो ये पानी हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ठीक है और सर ये हो गया हमारा एटीएम कार्ड ये आपका आरएफआईडी कार्ड बोलते हैं जो आपका मैग्नेटिक फील्ड वाला कार्ड है ठीक है तो इसमें से आप ये आपका हो गया रिचार्ज डिवाइस मतलब इस कार्ड में जो मनी रहेगा पकड़ के चलिए कोई आदमी 100 रुपया का रिचार्ज किया 100 रुपया का पानी जब ले लिया उसके बाद तो कार्ड का बैलेंस खत्म हो गया उसको रिचार्ज करना पड़ेगा थ्रू रिचार्ज डिवाइस ये कार्ड रिचार्ज हो जाएगा जो केयरटेकर का काम
उसको रिचार्ज करके देना। हाँ पैसा लेके हाँ पैसा लेके रिचार्ज करके देना, ठीक है। और वो भी आपको ऑपरेट होगा थ्रू अकाउंट से, ठीक है। नहीं आप ये पकड़िए, ठीक है आइए। ये हमारा जो आपका है 1 लीटर बोतल का नहीं है, जाके किसी में जाओ लाओ मांगो USAID बिला ये मोनो খালি যদি দিলে হয় USAID এটা ইয়াতো চলব না এটা প্রয়োজন করলে গেট পাঠাবো কোনো মানে এটা যে অফিসার দিতে চলে রাজি আজিব যাও না অফিসার তুমি কি নিয়ে দিব এটা আমরা মানে তো সাংসারিক দিলে ভাই মাথা কাটা দিলে ভাই সাংসারিক দিলে মানে এটা ঠিক কাজ এটা সিজনাল হয়, ইলেকশনের মত খাওয়া মানে পুরি খাবো পয়সা দিব ভাই ये 1 लीटर का बोतल है। हाँ तो पहले क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसे टैप सिलेक्ट करना पड़ेगा। हाँ यहाँ पे दिखा रहा है, देखिए पावर कैसे पावर इसको ऑन किया है। हाँ ये यहाँ पे दिखा रहा है, ये ड्रिंक वेल, हाँ अंदर में स्विच है, ये हम लोगों का ड्रिंक वेल का है। हाँ सिलेक्ट टैप मतलब टैप सिलेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं 3 नंबर। हाँ ये आपको 3 नंबर सिलेक्ट करना है, ये 3 नंबर। अच्छा हाँ ये टैप के लिए देखिए रेड कलर का लाइट आ गया। हाँ अच्छा अभी कोई नहीं चल रहा है। फोटो कौन से फोटो, अच्छा ये साइड तक फोटो। ये टैप दिखा रहा है, टैप हमने टैप सिलेक्ट किया और इसको बोतल यहाँ पे लगाना पड़ेगा और पैसा का यहाँ पे डालना है। हाँ देखिए यहाँ पे कार्ड और कॉइन बोल रहे हैं ना, इनवैलिड दिखाएगा। अगर पैसा नहीं लेगा तो ऐसे इनवैलिड दिखाएगा, अगर पैसा लेता है जैसे बोतल लगा के बुटावर का नहीं। हाँ इसे क्यों नहीं लिया बुटावर का ना होना। एक रुपया का कॉइन मेरे पास 2 रुपया का है। मैं देखी करो 2 रुपए का नहीं मिला है सिलेक्ट किया हुआ है 1 रुपया में। हाँ 1 लीटर। ये अच्छा हाँ बोला से सब। हाँ 1 रुपया हाँ 1 रुपया मिला है पूरा 1 लीटर मुझे स्टॉप ऑटोमेटिक स्टॉप। अच्छा अच्छा बढ़िया बढ़िया उड़ी का पड़ेगा बोतल अच्छा है। हाँ बोतल अच्छा है, आप खा सकते हैं। खा सकते हैं है ना अभी जो आया है जो रिजर्व में वो टीचर वाटर हाँ टीटेड वाटर हो गया रबो में जाए सर वो ताते जाए सर वो आप खा सकते हैं सर। ये डायरेक्ट यूबीओ से आ रहा है। नहीं नहीं नতুन बताओ हां जाए सर। थैंक अच्छा है वेलकम ढक्कन। अच्छा और ये आप कार्ड लगा के भी कर सकते हैं। जैसे ये टैप 1 है और टैप 2 है, ये टैप 1 है, ये टैप 2 है, ठीक है। तो आप टैप थी ओनली कॉइंस ओनली कॉइन, अच्छा समझता है जो कॉइन आपका नहीं लेगा वो ऐसे रिटर्न करके आ अच्छा जाएगा। 2 रुपये देने का तो नहीं होगा नहीं 2 रुपीज देने से भी होगा, लेकिन पहले से सेट करके रखना पड़ेगा। सेट हम लोग सेट अंदर से कर सकते हैं, वो अंदर से नहीं यहाँ से कर सकते हैं। इसका एक मास्टर कार्ड है, ठीक है, वो अलग है। वो मास्टर कार्ड से तो 1 रुपया के 1 लीटर 1 रुपया का 2 रुपया का कुछ भी कर सकते हैं। 1 रुपया के 1 लीटर बहुत सस्ता है। 1 रुपया तो 20 रुपया ले आए हैं 20 रुपया लेता है बाहर। अभी काम कर रहा है मीटर काम कर रहा है ना। हाँ अभी कम कर रहे हैं। ठीक है सांसारी একটু মানে 1 লিটার এই 1 লিটার একবার 10-20 টাকা লয় ये सांसारी नहीं होना। सांसारी মানে একদম মানে বঢ়িয়া শুনি যে বিক্রি করে দাও পালা তুমি এদিকে আসো। চলে যাও एक वहाँ दाঁড়াও, फोटो তুলবে স্যার এটা নেবে, ঠিক আছে। अच्छा सर आप एक काम कीजिए, ये सिलेक्ट टैब बोल रहा है, आप टैप 1 टैप 2 कोई भी सिलेक्ट ট্যাপ 3 কর অপশন এক টাকা নেবেন তো ট্যাপ 3 করুন। 1 টাকা নাই না বোতলটা ওখানে লাগানো আছে, নাহলে টাকাটা দিলেই জলটা ওয়েস্ট হয়ে যাবে। হ্যাঁ এবার পয়েন্টটা দিন। पॉइंटर दिए बस जाने दिया এটা জানো বঢ়িয়া বস্তু যে लेक्चर समझ
ओके, बहुत सेटिस्फाइड। और सर ये कार्ड का भी आप देख लीजिए। कार्ड का मैं कुछ फीचर्स में आपको बता दूंगा। एक्चुअली कार्ड जो है ये मैग्नेटिक फील्ड वाला कार्ड है। हाँ, इसको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स जो वस्तु है उसके ऊपर रखेंगे तो ये कार्ड खराब हो सकता है, तो इसीलिए सेफ रखना है, क्योंकि ये मैग्नेटिक, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो आप जैसे 20 लीटर का जार है, इसको भी भर सकते हैं। जैसे आप कोई भी टैप सिलेक्ट कीजिए, टैप 1 टैप 2, फिर अभी कार्ड को टच कीजिए, ऐसे ही टच कीजिए। हाँ, यहाँ पे कीजिए, 20 लीटर आ जाएगा। ये 20 लीटर आएगा। और ये टैप कितना रुपया? ये देखिए, ये आपको रेट आप ठीक करेंगे, ये कार्ड आपके हिसाब से आप रिचार्ज कर तो आ रहा है। हाँ, ये 20 लीटर आएगा। 20 लीटर के 20 तो का 20 हम कितना बार ये ला सकते हैं ये कार्ड? जब तक आपका बैलेंस रहेगा कार्ड में। कितना है इसमें? अभी तो बैलेंस हमने 100 रुपया का डाल के रखे है, लेकिन जो कस्टमर जो रहेगा 500 रुपया भी, वो 500 रुपया भी डाल सकते हैं, 50 रुपया भी डाल सकते हैं, और 20 रुपया भी डाल सकते हैं। वैलिडिटी रहेगा ना इसका, क्योंकि और ये जो आपका वैलिडिटी रहेगा, जो आप अगर के चलिए 50 रुपया दिया, उसका एक वैलिडिटी रहेगा। ये कार्ड हम किसी को दे सकते हैं? हाँ, दे सकते पैसा हैं। लगेगा। हाँ, दे सकते हैं। ठीक है, और आप सर आप भी कीजिए, ये टैप 1 सिलेक्ट कीजिए। ये टैप 1 सिलेक्ट करके आपको बोतल देना है, नहीं तो वेस्ट हो जाएगा। ये कार्ड को टच कीजिए, जो राउंड वाला सर्कल है। पैसा कहाँ पे जमा पैसा देखिए, पैसा जो आपका रहेगा ये ऑटोमेटिकली अकाउंट में जाएगा। हाँ, ये हम किसी सर से बात किया है कि वहाँ का एक अकाउंट बनाने के लिए। हाँ, जैसे वो ये पैसा जो रहेगा, पैसा जाके वहाँ पे कितना पैसा जमा है, कैसे वो आपको जो रिचार्ज डिवाइस है वहाँ पे लगाने से। हाँ, वहाँ पे रिचार्ज डिवाइस से दिखा ना, और आपका मोबाइल में आपका वो कार्ड रिचार्ज डिवाइस में लगाएगा ना, आपको कितना बैलेंस है और शो करेगा। कार्ड का डिटेल्स जो आपका देखिए, जो कार्ड है वो जिस नाम से कार्ड इशू होगा, हाँ, वो कार्ड के पीछे में जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यहाँ पे नाम लिखा रहेगा, जिसका नाम पे कार्ड है वो लिखा रहेगा, और उसका डिटेल्स जो है, और यहाँ पे आपका डेट भी लिखा रहेगा। हाँ, कि कौन सा डेट में ये इशू हो रहा है, ये आपका जो आपका इशू हो रहा है कौन सा डेट यहाँ पे डाल देगा, और यहाँ पे आपका नाम डाल देगा। और ये कार्ड जिसके नाम पे है उसका जो डिटेल्स है वो हमारा एक ऐप्स है। हाँ, वो रिचार्ज एडिक्ट है, जिसमें आपका शो है। हम अभी 10 लीटर करके इसको सेट करके रखे हैं, इसीलिए 10 लीटर ही निकला है। हाँ, 10 या 20, ये 10 है क्या? हाँ, यहाँ तक 10 से थोड़ा ज्यादा है। वो टोटल कितना लीटर? टोटल आपका 20 लीटर आएगा इसमें। हाँ, 20 लीटर ना, 15 लीटर आ गया अभी 15 लीटर आ गया, 10 नहीं है, 15 लीटर आया है। मतलब 15 लीटर हम सेट करके रखे हैं। हाँ, इसको आप बढ़ा के कोई कुछ भी कर सकते। कितना? 5 रुपया में? हाँ, 5 रुपये में आप कुछ भी अमाउंट दे 5 रुपया में 15 लीटर आ जाएगा। हाँ, नहीं, इसमें हम सेट करके रखे। कितना खर्चा हो गया इसमें से? जितना पानी उठाएगा। अभी 15 लीटर आया है, कितना रुपया 20 टका दिया हो गया इससे? 5 करके 10 रुपया। तो दोनों कार्ड में ये 5 करके 10 रुपया डायरेक्ट हुआ है। यहाँ पे 5 रुपया, वहाँ पे 5 रुपया, दोनों डायरेक्ट हुआ। नहीं 15 लीटर में 30 लीटर में 10 लीटर। सॉरी, अच्छा, पूरा सिस्टम में कितना खर्चा है आपका? पूरा सिस्टम में तो ये 14 लाख का टोटल पैकेज है। हाँ, तो उसके अंदर हम लोग ये बनाया है सिस्टम। हाँ, तो सर हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा सर रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा गेस्ट जो है आपका यूएसए से है, जो हमारा सीईओ है वो यूएसए से है। फिर हमारा कुछ डेलीगेट से आपका नोएडा से है, वेस्ट बंगाल से है। तो आप प्लांट तो विजिट किए, आपको कैसा लगा? हम लोग यहाँ पे एक सैनिटाइजर भी रखे हैं अभी। ये अभी टाइम तो सिचुएशन पेंडेमिक के लिए चल रहा है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे आपसे, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कुछ फीडबैक दीजिए। तो बहुत अच्छा लगा है ये प्लान, पीपल सो बेनिफिट होगा ये प्लान से, बहुत अच्छा लगा है, जो सिस्टमेटिक है।
ठीक है। अच्छा, आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? आप भी कुछ बोलिए। फ्लोराइड इफेक्टेड यानी कि आर्सेनिक इफेक्टेड हैबिटेशन में ये सब होने से बहुत अच्छा बहुत अच्छा है। हाँ, फिर भी ये एक्चुअली ये हम लोग पॉपुलेटेड एरिया है। हाँ, ये हम लोग इधर का लोग बेनिफिट आर्सेनिक आपका आर्सेनिक का फ्लोराइड का दोनों का दोनों का सिस्टम बनाते हैं। हाँ, हाँ, ये आर्सेनिक इफेक्टेड एरिया है, इसीलिए यहाँ पे आर्सेनिक इफेक्टेड का प्लांट बना है। जहाँ पे आपका फ्लोराइड इफेक्टेड होगा वहाँ पे फ्लोराइड इफेक्टेड प्लांट सिस्टम लगा सकते हैं। जहाँ पे आपका आयरन ज्यादा है वहाँ पे लगा सकते हैं। बात बोलेंगे। हाँ, जो फ्लोराइड इफेक्टेड एरिया है, जो ये तो रोटारी बोरिंग है, हैंड बोरिंग। हाँ, जो आप लोग जो कौन मिलेगा नीचे में, तब क्या बोरिंग? तो मशीन बोरिंग होगा। आप लोग भी करें। हाँ, वो कर सकते हैं। इसमें तो फ्लोराइड आर्सेनिक मिलेगा, इसको रिमूव करने का पूरा टेक्नोलॉजी अलग अलग है। और हम लोगों का जो टेक्नोलॉजी है ये इसमें वो इसका फेरी करेगा क्या वो जो कस्टिंग का इसमें आप बोल रहे हैं इसमें 14 लाख पड़ेगा। वेरी करेगा। हाँ, वेरी तो सर देखिए, वेरी तो थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, लेकिन मोटा मोटी कॉस्ट वैसे ही आता है। और यहाँ का जैसे हम लोग देखें कि आयरन आपको बहुत ज्यादा है, 2.96 mg पर लीटर। हाँ, जैसे हम लोग जब ट्रीटेड वाटर को टेस्ट किया, हाँ, उसका आया है आपका 0.32 mg पर। नदी का पानी से भी कर सकते हैं? हाँ, कुछ भी पानी से कर सकते हैं। हाँ सर, हम लोग ये और भी हम लोग का प्रोजेक्ट है, वो भी हम कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट हम लोग का आपका पीएचडी का हम लोग प्रोजेक्ट जो कर रहे हैं, बहुत मतलब मोटिवेशन के साथ काम कर रहे हैं। और सर ये हम बोलना चाह रहे हैं कि हमारे गेस्ट को, डेलीगेट्स को, कि ये मुकुट जी जो आपका एसडीओ है कामरूप का और सब असिस्टेंट इंजीनियर है रंजीत कलिता जी, दोनों ने मिलकर बहुत सपोर्ट किया हमको ये प्लान बनाने में। और ये अगर नहीं रहते तो हम लोग काम कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छी तरह से शुरू से लेके खत्म होने तक, एंड तक बहुत अच्छी तरह से हम लोग को सपोर्ट किया। तो इसीलिए हम लोग ये प्लान बना पाए सक्सेसफुली। वी हैव लॉन्च टुडे, सो दैट इज ऑल। सो इफ यू वांट टू से एनीथिंग टू आवर गेस्ट, यू कैन से about this plan. Sir, if you want to say anything, you can also say. Subhashish. Yes. Subhashish, Mr. Anand Rudra, he's the senior advisor of USAID. He wants to ask something. Sir, if you want, you can ask any question to our guest. Hello. Yeah. Is my voice clear? क्या? Palash, is my voice clear? Yes. Voice is clear. Yeah, Palash, just wanted to convey a big thank you to the guest, Mr. Barman, and the other gentleman. Barman sahab, thank you so much for coming today, and also just wanted to let you know we are working with the Ministry of Housing and Urban Affairs. I report to the Joint Secretary of Swachh Bharat Mission and Amrut. So Mr. Barman, I think you coming for this site visit is a proof that you feel that these kind of things should be there for people to access clean water. तो आप यहाँ पे आए, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं, हम बहुत खुश हैं। আপনি এখানে এসেছেন এটার জন্য আমরা খুব খুশি। আর এখানে লোকেদের জলের জন্য যে আপনাদের যেটা হেল্প পাচ্ছি সেটার জন্য আই থিংক Drinkwell is very much proud. So thank you so much for your partnership, and just one small request, in the coming 3-4 months আমরা যেহেতু সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের সঙ্গে কাজ করি, we work with the Ministry of Housing and Urban Affairs, and you understand that all the city corporations, including Guwahati City Corporation, the Assam State Principal Secretary Urban Development Shokkule Rai, they basically are in touch with the central government program on Amrut, our Swachh Bharat mission. Amrute একটা project আছে which is about providing clean water to every household, which is part of the Jal Shakti ministry, but the Amrut is taking care of the urban part in cities. So a small request, this water ATM which is there in front of you, we would like to work with you so that we can set this up as a knowledge center, so that in the coming Swachh Sarvekshan, which is happening in January, which is just 3 months from now, we would like to use this center to advocate
knowledge for people on water, on sanitation, and currently because of Corona, we would like to tell people about hand washing. Just wanted to say thank you for your support, and we hope to be in touch with you as part of the bigger program. I just wanted my partner Poonam ji to say a few words. Poonam ji, you're on mute. पूनम जी आपसे कुछ बोलना था। नमस्ते, गुड आफ्टरनून सर। मुझे ये कहना है, मुझे ये आपका प्लांट देख के बहुत अच्छा लगा और ड्रिंकवेल की टीम और आपकी जो साझेदारी है उसमें काम बहुत अच्छा हुआ है। हम चाहते हैं यहाँ से ज्यादा लोगों को पानी मिल सके। तो यह जान के बहुत खुशी हुई कि ये जो आपका कैंपस है इसमें कम्युनिटी को आने के लिए, आप पानी लेने के लिए इजाजत देंगे और उनका ध्यान करेंगे। तो अब इस वाटर एटीएम पे हमको हमारे दो काम पूरे हो जाएंगे। एक तो एक्सेस टू सेफ वाटर जो आप लोगों ने करवा दिया, और दूसरा इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड नॉलेज, जिससे कि ये नॉलेज हर सिटीजन के पास चला जाए। और हम चाहते हैं ये जो वॉश का और स्वच्छ सर्वेक्षण का जो भी काम है वो एक जन आंदोलन में बन जाए, जिससे हम हर सिटीजन को जागरूक कर सके। साफ पानी पियो अपने स्वास्थ्य के लिए और अपनी जगह बिल्कुल साफ रखो। और हम इसके लिए आपके बहुत आभारी हैं। थैंक यू वेरी मच। Thank you. Welcome, ma'am. Thank you. हो जाएगा ना? आगे चल के हम तो कोशिश करेंगे आपका प्लांट आके देखें और आपके साथ मिलें। बहुत अच्छा लगा। Palash, please thank the chief guest on our behalf. Thank you so much, Palash. Thank you everyone. Thank you, sir. Thank you. थैंक यू। नमस्ते। সুদীপ দা আর কিছু বলবেন? না, ঠিক আছে। Thank you, sir, for your presence and also for supporting us so much. Thank you, sir. Okay, Hello. Shubhashi. Okay, Shubhashi. Can you hear me? Yeah. Does Mr. Burman or anybody want to say anything to us? Sir, Ranjit ji want to say something to. Please, Ranjit ji, boliye. Sir, I shall be ever grateful to you if it is installed in the fluoride and arsenic affected areas, sir. This is my special request to you. Absolutely, Ranjit ji. What we are doing is, हमारे प्रोग्राम के सहयोग से we have set up about 15 such water ATMs in the entire country. 15, मगर ये 15 are just like model, and we are actually working with the partners such as Minaz and other partners and Sudeep, so that ऐसे ही water ATMs और भी जगह में लग जाएं. Your point is noted. We will be working with more partners so that more people can benefit from the facilities like this. But we always need support from the government officials. So your support is very important. Mr. Burman's support is very important. That's why we are very grateful that you are supporting us. And we will be reporting this to the central government. We will be reporting it to the Amrut team, to the Swachh Bharat team, that we have got support from you. Yes, sir. Yes, sir. We shall render our full support to you. Absolutely, sir. Thank you very much. Anek dhanyabad. We are very grateful to you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Okay. Thank you. Bye, sir. Thank you. Bye. So हम लोग अभी सर सुदीप जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? सुदीप जी बोलिए। सुदीप जी, हाँ। नहीं, ठीक है सर। थैंक यू फॉर योर टाइम। आज संडे के दिन आप लोग आए हैं अपने टाइम निकाल के, तो वी आर वेरी ग्रेटफुल सर। बोला कि संडे को आप लोग टाइम निकाल के आए, इसीलिए दे आर वेरी मच ग्रेटफुल। ओके, थैंक यू। तो हम लोग सर संडे तो कोई नहीं, कुछ नहीं। This is utility service, sir. नहीं, Burman sir, you will not believe it. 2nd October was a holiday, and on Friday इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ in the Ministry of Housing में. We were all there representing
असम के इतने रिप्रेजेंटेटिव थे, सिटी कमिश्नर्स थे, स्वच्छ भारत मिशन के नोडल ऑफिसर्स थे. We were very happy to see all the cities there. So you're right. हमारे लिए Saturday, Sunday is nothing. We are there to serve the people. So hearing it from such a great officer like yourself, we are very grateful. We look forward to जब ये कोरोना का situation will be improved. We look forward to coming down and visiting you, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. Okay, sir. Thank you. Thank you. Bye, sir. Bye, bye. ओके, तो ये लॉन्चिंग प्रोग्राम यहीं पे खत्म करते हैं. हाँ, और नहीं, Sudeep and Minas, Yes. I Yes, we have are- one special request. Can I use your platform for a minute for another activity? I want all Yeah, the team. let the chief guest go, ma'am. Are you asking the chief guest to go? I think Sudeep has already asked his permission. Yes. Subhash, you can escort the guest. Subhash. Okay, Subhash. Ma'am, after the guests have left, can we again continue this thing so that we can have got something message from Poonam ji? Yes, I think the guest has already left. So, Poonam ji, please boliye. Yeah, I would want all the team members to be introduced to Dr. Hemant Sahasrabudhe, who has joined this program from Nagpur. Oh, namaskar, Hemant sir. Dr. Namaste. I am from Nagpur, and actually, A Actually, brief background about Dr. Hemant is he was previously worked with the municipality of Nagpur, currently under the USAID Seva project. He is our point person for City Water Alliance in Nagpur. He is a very learned person and he is on various committees of Government of India, including the Ministry of Environment and Foreign Affairs. Besides consulting on water and other verticals, the very recently launched Atal Tunnel, which connects Manali right up to Rohtang Pass, the biggest tunnel in the world, has been given clearance by Dr. Hemant Sahasrabudhe. He has advanced the Seva program and the City Water Alliance program in the city of Nagpur to very great heights. So because he has joined us today, I just we've heard so many good things from the Poonam ji and I think the Seva team. It's nice to see yourself on the camera. Sir, a few words will be nice to see. How do you see the project going on now, sir? Because mere liye, it's a very special occasion because I've always told Poonam ji and Pooja ji and others that get the private sector, get the private sector, get the private sector. आज इन्होंने मेरे को एक दूसरा रूप दिखा दिया स्टोरी का by making sure that there is a government angle to it, that the government is a very key factor to this. Without the government, without the public sector, things cannot be sustained. Private sector can start, they can help to trigger, but sustainability without the government नहीं हो सकता. So number one, thank you Pooja ji, thank you Poonam ji for basically making sure this is happening. And Dr. Hemant ji, आप कुछ बताइए how this is to move forward. Actually, जब before ये यहाँ ये प्लेटफॉर्म पे आने के पहले पूनम जी मुझे बता रही थी कि वाटर एटीएम, पर एग्जैक्टली मीनिंग में समझ नहीं पा रहा था. एटीएम का मतलब हम पैसे निकालने के लिए बैंक जाते हैं और हम पैसे निकालते हैं, इतना ही मुझे मालूम था. ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, समझने वाली बात है कि व्हाट एग्जैक्टली द वाटर एटीएम इज, बिकॉज आई हैव सर्व्ड 25 years in Nagpur Municipal Corporation as an executive engineer, superintending engineer on various and I have been in touch with the municipal corporation with so many bodies. Actually today I am with the state government, government of Maharashtra in Ministry of Environment as an expert member, and earlier I was in the government of India in the Ministry of Environment as an expert member. So we have given a lot of environmental clearances. So we have given a lot of environmental clearances to industrial project, with the water projects, with the infrastructure, township, etc., everything. But this is a new thing for me. And today, actually, I am working in the poor sector, that is the slum area. I was the project director earlier for 5 years in the German Grand Commission, that is GTZ project. So I was the Indian counterpart. And we have selected the most neglected area of the slum today, so that they can be benefited with this scheme.
and we have early in the first instant we have selected 8 slums, and out of the 8 we have almost completed the 4, and we have generated the data, and we are actually continuously monitoring and continuously communicating with the municipal authorities to get the things done in a proper way. So this So, is what is Anandji, going. this is about the Seva project where they are working in 8 slums Yeah, under the Municipal Commissioner of Nagpur. yeah. Actually, it's a Seva project, and actually, it was not knowing this the what exactly mean, because the municipal authority used to provide the infrastructure in the slum areas, including the water distribution system also, and they wanted to lay the pipelines and have the connections of water and get the water meterized. So this is the conventional way what they are doing. But this is actually what is water ATM and getting the water from one point. So this is something different. Only thing is that we have to find out here the water source when they are drawing the water from the underground. So that is the bore water. So what could be the probable quantumization of water required to distribute, so that the area could be selected accordingly to draw the underground water here. So this is what is called water quantumization and water management, so that if it is successful, if it is okay and found suitable place, then this is good enough as far as the getting the purified water. So, thank you, Hemanji. Thank you very much. Thank you very much. I'm pleased. Yes, thank you, Himanji, for joining. Thank you. I'm Minhaj, the CEO and co-founder of Drinkwell. I just wanted to briefly just share 3 quick points that kind of came up in the Q&A panel in the chat box. So the first is, what is unique about this system on the technology side is that we are using a ion exchange resin called Higgs Nano, hybrid ion exchange nanotechnology. So it is something we manufacture in Calcutta in our own factory, and it can selectively remove arsenic 3, arsenic 5, iron. We also do fluoride, but this is an arsenic iron removal system. And the net benefit is twofold. First is you can actually recover 98% of water, whereas RO is 50 to 60%. Now, because we also use other polishing unit, micron filter, UV, it ends up being closer to 90% recovery. And because you have to do backwash and other things. But still, we find that that is actually materially better than what we are finding in most of the other systems that are used for decentralized water kiosks, which is just RO. The second thing is, naturally, as you saw, we primarily work with a model where we have the tender, the PHED kind of help scale. Otherwise, there's not enough capital in the CSR budgets or donors to really make this a viable option for the magnitude of the arsenic and fluoride issue in India. And then the final point is just basically, I think, we are more from the technology perspective, manufacturing resins, doing system design, really looking at troubleshooting. So I think, this partnership is exciting for us because we can actually now leverage the learnings of Safe Water Network, USAID, SEWA, to actually now start to also focus on awareness, marketing, and the utilization of the system. Because one thing I've noticed all across India is you have these systems, but the utilization rate is very low. So we must make sure that once you deploy a system, that you actually have people coming to collect water, that it's not just at 20, 30% utilization. So I just wanted to share those 3 points. It kind of came up during the text box Q&A. So happy to answer any follow-up questions any of you may have. Yeah. Actually, truly speaking, in our central part, Nagpur, there are very few industrial development in the Nagpur. So fortunately, what happens that the Nagpur is having a very soft water. By default, it's a soft water. So even if you draw the underground water, also it's a soft water. So the treatment, it's cheap. As far as the potable water is concerned, the treatment is very cheap. So we can grab that point,
because in most of the towns, or even if I travel so many parts of the India, so found that the water is so hard. So it's difficult to have even the costly affair as far as the treatment is concerned. But here in Nagpur, it's the treatment is a bit uh, I mean, not that cheap. So the availability of water, availability of potable water after the treatment is a good enough, and we can actually implement this idea in. To the best of my knowledge, I have worked here in the township area, 300 acres, outskirts of the Nagpur city. But whenever we see that there is not much municipal water network in the outskirt part, because the municipal water network is within the municipal limit and within the core part, and you get the water, ample water availability. But in the outskirts, this is the what we can have this idea to draw the water and to treat the water and to give it to the township areas and etc. Everything. This is a good idea. I mean, thank you. Great. Thank So you. thank you very much. Anandji, would you like to say a few things, or would you like to end the meeting? Yeah, I think Dr. Hemanji is so nice to put a face against so much of things that Poonamji has said all the time, that she has got that support from Nagpur. And we used to say, what is the magic? How are you able to do what we are not able to do in other cities? She used to say, there's one person who's behind all this. So I think that's great to hear. But one thing I just wanted to also hear from Minaz. Minaz, amazing work. I always knew these were great things that you were doing. Sudeep, Pranash, everybody is fantastic. The launch today. I think one of the components that we have been saying everything, and you have hit the thing, Minaz, already, that the sustainability was dependent on things which are of different natures to different water ATM players. For others, it may be the private sector. For you, you basically went the route of the PHED and the government and the city corporation and all. So I've got a very small question, and you may decide to perhaps answer us offline. But when you go in for a plant, you just walk up to the city corporation and say, I have a plant, I need this 20 lakh rupees, whatever that money is, and the technology is already proven. So give me the money. How do you approach a city corporation? I'm sorry, I'm asking you too many secrets of the trade, but at this time I know we are part of the same family. No, absolutely. That's a very valid question. And I would say that, we basically have to go with the pre-qualified contractors who are already in the jurisdiction we want to work in. So what we do is we will mainly work as the technology supplier. And we will then, this is a unique instance where we actually were able to directly get the tender. But in parallel, we also have other contractors that we work with who enable these relationships, who have already been in the Assam kind of water infrastructure space, who then basically look at our CSIR certification of our resins as the basis upon which the PHED can adopt a tender that specifies our resins. So is the PHED planning to do this in more numbers across West Bengal and Assam? Yes, absolutely. In fact, it's already been done in Bihar PHED, with West Bengal, and now obviously with Assam, with these five. Because Minaz, this is the information that you should share with Seva, because Dr. Hemant is there, we are there. When I walk up to Dr. Thara's room, when I walk up to, like earlier on Jindal and now the new JS of Swachh Bharat Mission, they just say this, that ये काम तो सरकार का है. We basically will be giving piped waters to everybody. That will resolve the problems of drinking water. आप लोग ये काम क्यों कर रहे हैं? And I and Poonam ji, we are looking at each other. We are in the business, but we are looking at each other. So what you are saying shows that if there is a technology, if there is a solution to a challenge which is cross-cutting issues of NGO or non-NGO, government policy or non, the government actually listens. In other words, आप जब गए उनके पास और उन्होंने बोला हमारे पास आर्सेनिक हटाने की एक तरकीब है. I'm sorry, I'm using different words. My Hindi is not that good. But the fact is, आप लोगों ने जब ये तरकीब बोली, उनको लगा कि हाँ ये समाधान तो है और इसको थोड़ा सा अपनाया जाए, इसके लिए एक टेंडर निकाला जाए. So my question to you is,
I understand this is what has worked, and you are now X number of plants across West Bengal, Bangladesh also, Assam now. I think it's time that Seva starts going beyond just making friends with everybody, because we need to survive together. We cannot survive alone. I cannot, Poonamji cannot, Minaz you can't, Madhu cannot, as this thing. We need to survive together and with each other. I think we have a strength. That is exactly what Poonamji told me when she and Ravi sir came to me 2 years back, saying like, Anand, this is something where we as a family are a stronger strength than when we work alone. And I totally agree. And every day, if you ask me, I'm finding strength in that belief. That belief is कि एक साथ रहेंगे तो बहुत मतलब हम सबको शक्ति मिलेगी, other than the fact that we are all working alone. And you can see, it's just not about Dr. Hemant ji being on the team. It's the people like Dr. Hemant who basically add value to not just being a water ATM entrepreneur, but people who are part of the government system. And when I'm sure Dr. Hemant also hears what you are saying, he also feels excited. Then he says, "Oh my God, this is not written in Amrut anywhere. This is not written in smart cities anywhere. This is not written in Swachh Bharat Mission anywhere. But it is working. It is providing the water which the government has promised to the citizens." I think this is exactly the message which I think Seva can take forward. Poonam ji, correct me if I have said something wrong, but I think आपने बहुत अच्छा सेवा के सदस्यों को चुना. Hats off to you. Hats off to Pooja ji and the team. But I think the work is not stopped. Again, I'm sorry to say the work has not stopped. ये काम अभी सिर्फ शुरू हुआ है. 1 साल भी नहीं हुआ इस कार्यक्रम को. पूनम जी, अब इस चीज को आप आगे ले आइए. Please take it forward. Adding to what Anand has said, I just want to say one thing. The objective of Seva is to help all the partners grow. We have a network of people. If you need any assistance, you can just put an inquiry. If we have somebody, we will immediately extend help, because that is our objective. Because the collective objective is safe water for all. Whosoever provides, we are all needy ones. Dr. Hemanji, I would just like to add to you, about 2 years back, again under the guidance of Poonam ji and Ravi ji, we went up to the chambers of Neeraj Mandloi that time. You remember Neeraj Mandloi? He was Amrut's joint secretary. He was totally mystified and totally smitten with when Poonam ji and Ravi speak. It's like, मतलब मुंह से अमृत ही निकल रहा है. So the question that came in was, how can we help you? कुछ बातें हुई, कुछ बातें अधूरी रह गई. And one of the objectives which we want to take forward, Dr. Hemant, through people like you, is the examples of what Minaj does, the examples of what Poonam ji and other people are doing. They're very much on the ground. ये चीज ground से ऊपर उभर नहीं पा रही है for some reason. Policy issues are there. And I feel the only way we can break the shackles is by numbers. आज 10 हैं, I think we would like to make it as 15. कल 15 है, I would like to make it as 20. And आज आपने सुना कौन बोल रहे थे? पूजा जी, रंजीत जी बोल रहे थे ना आज, सुदीप, जो वो कह रहे थे कि why can't you make more plants like this? I think Sudeep, the word is very clear. That means there is a need, है ना? Need तो है, ये तो है. It's not about arsenic or fluoride. हाँ, arsenic and fluoride is a starting point to say, अरे यहाँ पे प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को इस टेक्नोलॉजी से समाधान करो. I would say, please take the word forward to expand the number of water ATMs. I feel that is the only way we can gather momentum. जो एक या दो आदमी बोल रहे हैं, जब 50 लोग या 100 लोग बोलेंगे, कोई ना कोई जरूर सुनेगा. That's what I feel. That is what Seva is all about. I'll leave it here. Again, congratulations everybody. I look forward to seeing the beautiful pictures. Please, Sudeep, photograph zarur bhejna. And Dr. Hemant, thank you so much for coming on this event. This just adds the value that it's just not a donor-driven issue. And after the event is over, we say, "Acha, next, dusra kya hai?" I think you have brought in very good concept that you have been part of the government. And today, Minaz, the way you basically showed us that government can actually have a role in owning up a water ATM from day one. I'm grateful to everybody who came on this call today. Thank you once again.
Thank you very much. I would like to say 3 cheers to team Drinkwell. बहुत अच्छा प्लान दिखाया, तबीयत Absolutely, खुश हो absolutely. गई. Very well done, Minaj. you, Anand ji. Please convey to Palash and everybody who had fantastic camera work. मैं कह रहा हूँ सुदीप, मानना पड़ेगा. मतलब हम लोग वर्चुअल विजिट्स करते करते सोचते थे कि ऐसा नहीं हो पा रहा है. We feel as if we are there in Guwahati today. The way you people had 2-dimensional angle of cameras. कभी-कभी लगता है एक ही कैमरा है, आपने तो मतलब पूरे चीज को बदल डाला है. Thank you, sir. Thank और you. मिनाज, हमने आपको आज बहुत अच्छा डलस में गुड मॉर्निंग दिया है 4 AM. Minaj, thank you for joining and taking the time out. It's been a pleasure always. Absolutely. Okay. Absolutely. So when everyone drops off, I would just like to have Minaj for 2 seconds so that we are having a conference. I want to message मिल गया, we're dropping off. Okay. 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 Thank you, Thank you, everyone. Anand ji. Thank you. Thank you, Hemant ji. Thank you.